I myself, Rohira Jagruti, I joined Radhika EduCare School in the year 2014 and 15 as an admission counselor, and today I really feel proud that I was the first employee of Radhika EduCare School. First of all, I would like to congratulate Team RES, Principal Shivani Acharya ma'am, and Mr. Bhartesh sir for successfully completing the 5-year journey of Radhika EduCare School. I would also like to congratulate the students of Radhika EduCare School for achieving the outstanding results in their board exams. Radhika EduCare School is completely a different school from the other schools. What makes Radhika EduCare School different is their co-curricular activities. And one such activity which I would like to share with you all is the interest clubs. Initially, when I joined Radhika EduCare School, we had one such activity, that is interest clubs, in which there were different kinds of clubs, say reading club, sports club, music club, cooking club. The students get the platform in which the students can join according to their interest area. Suppose if your child is interested in sports, they can go for the sports club. If the child is interested in cooking, they can join the cooking club. uh, I remember when we were studying in our school days in 90s, we did not get such opportunity to join the clubs according to our area of interest. The main purpose of such kind of interest club was that uh, uh, we can find out the interest area of your child, and we can give them the best training according to their interest areas. Radhika EduCare School is one of the best schools to find out such talents in the students, and I have seen that the students have been securing first rank, second rank in Khel Mahakumbh, and now the school has been achieving good results in their board exams. I salute Radhika EduCare School for its outstanding efforts that the school is putting behind the students. At last, I would say thank you. Stay safe. राधिका स्कूल एडुकेयर स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ कई सारी अदर एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती है जो बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से
की जाती है। जैसे कि इंटरेस्ट क्लब है, उसमें बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से क्लब चूज करते हैं। जैसे कि कुकिंग क्लब है, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब है, इवेंट मैनेजमेंट क्लब है, ऐसे कई सारे क्लब है जो बच्चे हैं जिसमें जिसको इंटरेस्ट है वो करते हैं। यहाँ बात कर रही हूँ मैं कुकिंग क्लब की। तो कुकिंग क्लब में क्या होता है कि बच्चों को है जो वो बेसिक नॉलेज है वो हम सिखाते हैं। जैसे कि बर्तनों के नाम, विटामिन्स, जैसे कि कौन से फ्रूट्स में से, कौन से वेजिटेबल्स में से कौन कौन से विटामिन्स मिलते हैं, बीन्स के बारे में जानकारी, ये सारी है वो बेसिक नॉलेज है। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है कि फायरलेस कुकिंग में सलाद करवाया जाता है, फिर मोनेको टॉपिंग है। ये सारी चीजें हैं जो हम बच्चों को सिखाते हैं। तो जब भी बच्चे घर में अकेले होते हैं तो अपने आप वो बना के कुछ खा पी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नींबू पानी है, बच्चों को बहुत पसंद है, तो वो नींबू पानी एक ग्लास में कितना नींबू स्क्वीज करना है, कितने शुगर डालनी है, कितना सॉल्ट डालना है, वो सब है, वो क्वांटिटी और क्वालिटी वो सब हम सिखाते हैं। उसके बाद का जो स्टेप है कि हमारे घर में जो भी कोई गेस्ट आता है तो उसको पानी सर्व करना है, ग्लास कैसे ट्रे में रखना है, ट्रे कैसे कैरी करनी है, ये सारी जो बेसिक जो नॉलेज है जो सुनने में बहुत ही आसान लगती है, लेकिन बच्चे जो भी करते हैं तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो वो सब बातें हैं वो हम सिखाते हैं। इसके साथ साथ किचन की नॉलेज तो बच्चों में डेवलप होती ही है, लेकिन गुड मैनर्स, गुड हैबिट भी बच्चों में होता है, और आगे जाके यही सारी स्किल्स है वो बच्चों को सर्वाइव होने में हेल्प करती है। थैंक यू।